Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. My name is Asim Amjad. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्किंग ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे. At the end of this lecture, you would be able to draw the complete set of working drawings and you would be able to list down the typical items on our drawing checklist. Then you will be able to describe how the drawing revisions are handled, and you would be able how to balloon an assembly and make a part list, and finally you would be able to explain the engineering change process and prepare engineering changes. The general definition of working drawing is it is a drawing that actually supplies the informations and instructions for the manufacture or construction of machines or structures. And the working drawing is classified into three groups. First group is the detailed drawing that actually provide the necessary information for the manufacture of the part. Second one is the assembly drawing that supplies the necessary information for assembly. And finally the part list that is required for standard parts purchased from a vendor. Drawing order of the working drawing. The drawing order of working drawing should be presented in the following order: assembly drawing, first sheet, then subsequent part sheets like part number 1, part number 2 and so on, or at last standard part sheets. This sheet is the last sheet of the working drawing and the assembly drawing is the first sheet of your working drawing order. Detailed drawing. Detailed drawing are the kind of the drawing that the most entry level drawing, and that drawings are made for manufacturing the each part of product that must have a drawing, and these drawing of individual parts are referred to as a detailed drawing. And the detailed drawing can be classified as mono-detailed drawing or multi-detailed drawing. Mono-detailed drawings can be prepared with one part per sheet, that is referred to the mono-detail drawing, and it is the most common type of drawing, and it shows the each component treated individually, and it also allows the parts to be used on other assemblies. It is required for correlating part and assembly drawings. And here is the illustration of mono detail drawing that actually shows the one part per sheet and the dimension values are in inches. Here is an other example of mono detail drawing. Multi-detail drawing. Multi-detail drawing can be prepared with several parts grouped on one sheet, which is called a multi-detail drawing, and it is preferred by some companies for specific products. It is common for one of a kind product. It is the economical drawing, or it required fewer sheets. Here is the example of mono. Here is an example of multi-detail drawing that shows the several detailed drawings on a single sheet, and the dimension values in these figures are in inches. So here you see mono detailed drawings are shown on a single sheet of paper. That's why it's called multi-detail drawing. Here is another example of multi-detail drawing. Detailed drawing requirements. A detailed drawing must supply the complete information for the construction of a part, and this information may be classified under the three headings. First one is the shape description, second one is the size description, and the last specifications. So, इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट की शेप है जिसकी हमने पहले कास्टिंग करनी है. ये उसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, और यहाँ पे जो डिमेंशंस हैं वो कास्टिंग की डिमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कास्टिंग के बाद इस पार्ट पे कुछ वेल्डिंग
जो है वो परफॉर्म की जानी है और उसकी डिमेंशन जो है वेल्डिंग की वो यहाँ पे शो की गई है। देन फोर्जिंग होनी है और इस पार्ट की अब फोर्जिंग की डिमेंशन जो है वो यहाँ पे शो की गई है, ये सेशनल व्यू ड्रा किया गया है। एंड देन फाइनली मशीनिंग हो रही फोर्ज पार्ट की जो हमने प्रीवियसली डिमेंशन यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो अब आप देखें कि 8 पार्ट के बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस जो है वो रिक्वायर्ड है और हर स्टेज के लिए ड्राइंग की जो डिमेंशन वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। इस वजह से कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पार्ट की शेप के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। लाइक अगर आप कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जब आप कास्टिंग बनाएंगे तो उसमें आपकी श्रिंकेज भी होती है, तो मटेरियल को अलाउंस देने के लिए आप उसकी डिमेंशन थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि जब वो श्रिंकेज हो तो आपकी रिक्वायर्ड डिमेंशन अचीव हो सके। जब आप कास्टिंग कर लेंगे तो एट फाइनल स्टेज पे हमारी मशीनिंग होनी है। अगर आप स्टार्टिंग में कास्टिंग ही इस डिमेंशन की करेंगे तो जब आप मशीनिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो तो फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी आपका इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके पार्ट की शेप्स के ऊपर। ड्राइंग चेकलिस्ट। So as an added precautions against error occurring on a drawing, a typical checklist may be followed, which include the dimensions, scales, tolerance, standards, surface textures and the material. तो एरर्स को रिड्यूस करने के लिए आप अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर इन सब इंफॉर्मेशन को लाजमी शो करते हैं ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो प्रॉपरली जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। इन दैट केस आप अपनी ड्राइंग की चेकलिस्ट को चेक करते हैं कि आपने क्या ये सब एलिमेंट्स को शो किया है अपनी ड्राइंग पे या नहीं। ड्राइंग रिविजन्स। Revisions are made to an existing drawing when the manufacturing methods are improved to reduce the cost or to correct the errors and to improve the design. तो मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एरर्स को करेक्ट करने के लिए और अपनी डिज़ाइन की इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपनी ड्राइंग के अंदर रिविजन्स करते हैं। So when a large number of revisions are to be made, it may be more economical to make a new drawing. अगर आपकी रिवीजन जो है वो एक खास अमाउंट से बढ़ चुकी हैं तो इट्स मच बेटर कि आप एक न्यू ड्राइंग बनाएं और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा आपके लिए। सो व्हेन दिस इज डन, जब आप ये कर लें, देन द वर्ड रीड्रा और द रिवाइज शुड बी अपीयर इन द रिवीजन कॉलम ऑफ द न्यू ड्राइंग। तो जो आपकी न्यू ड्राइंग बनेगी उसके रिवीजन कॉलम के अंदर रीड्रा या रिवाइज लिखा होना ज़रूरी है ताकि जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपकी ड्राइंग जाए तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकें अपनी प्रीवियस ड्राइंग के साथ कि ये रिवाइज ड्राइंग है या अपडेटेड ड्राइंग है। अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो मल्टीपल ड्राइंग जो हैं वो एट ए टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में होती हैं, तो वो अगर सेम ड्राइंग ओनली दिखने में ग्राफिक्स उनकी, तो डेफिनेटली वो आपका पार्ट अगेन गलत बन सकता है। तो ये रीड्रा या रिवाइज इंफॉर्मेशन का प्रॉपरली शो करना बहुत ज़रूरी है। So following figure is showing the revision history plot and that is located in the upper right corner of the drawing और ये इसकी according to standard dimensions है। जब आप ड्रा करेंगे अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर तो आप इन dimensions के मुताबिक इस revision history plot को ड्रा करेंगे। So a revision status of sheet plot is required on sheet one of multiple sheet drawings and record the revision status of each sheet, and the revision status of sheet plot is shown as a tabulation. तो रिवीजन स्टेटस शीट प्लॉट रिक्वायर्ड होता है जब आपकी एक से ज़्यादा ड्राइंग शीट्स होती हैं और उस रिकॉर्ड की रिवीजन के स्टेटस को कैटर करने के लिए आप रिवीजन स्टेटस जो है वो ड्रा करते हैं और इसको हम एज अ tabulation की फॉर्म में ड्रा किया जाता है। So the revision status of the sheet plot may be located
in the area of the revision history blot or the title blot or on a separate sheet for drawing in the boot form. तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिवीजन स्टेटस की जो ड्राइंग की डायमेंशन की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं कि आप जब ड्रा करेंगे इस ब्लॉट को रिवीजन स्टेटस के ब्लॉट को तो आपने इन डायमेंशंस के मुताबिक ड्रा करना है जो कि अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड है। इंजीनियरिंग चेंजेस, इंजीनियरिंग चेंजेस जो है बेसिकली यूज़ करती हैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस को, लाइक स्टार्ट द रिवीजन प्रोसेस, record the changes to the product, and according to the ASME dimension the revision of engineering drawing and associated documented standard। तो ये जो डॉक्यूमेंट और प्रैक्टिसेस हैं इसको आप मॉनिटर करते हैं, कैटल करते हैं अपने इंजीनियरिंग चेंजेस के अंदर कि रिवीजन प्रोसेस प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है या नहीं, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, और उसकी जो रिविजन्स हैं अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड 14.35 रिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपने परफॉर्म की है या नहीं। इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट, engineering change request is basically the document that is used to initiate the changes in a part or assembly, and it is required before a drawing can be changed, or it contain a change request number. Engineering change notice ECN, or you can say engineering change order ECO, or change order CO, that ensures the record of changes are kept, and it also include an ECN number. So here is the sample of engineering change request form. डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल जो है फॉर्म की वो शो की गई है, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, पार्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, इसी तरह से डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन, डेट एंड सो ऑन, तो जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो होती है। देन आप जो चेंजेस की हैं उसकी डिस्क्रिप्शंस बताते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन बताते हैं चेंजेस की, और उसके साथ साथ जो टेक्निकल एवेल्यूएशन है डिज़ाइन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड, वो आप स्पेसिफाई करते हैं। देन आप यहाँ पे उसका अफेक्ट बताते हैं, जो आपने चेंजेस की हुई हैं उनका उसकी परफॉर्मेंस पे, इंटरचेंजेबिलिटी पे, रिलायबिलिटी पे एंड सो ऑन कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। एंड देन फाइनली डिफरेंट साइनिंग अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म है। एडिटिंग ड्राइंग्स, व्हेन अ ड्राइंग चेंज इज टू बी मेड, an ECR initiate the change to the drafting department, then the drafter edit the original drawing or most recent previous revision of the drawing to reflect the instruction provided in the ECR. So when the drawing of part is changed, a revision symbol is placed next to the change or change on the drawing. Then the changes are recorded in the revision history block, and a specific letter is used to show the current change in the title block. And the revision symbol is a circle with a letter inside, and the text height is lie between 0.18 inches and 0.24 inches, or you can say 5 to 6 millimeter, and the circle diameter is lie between 9.5 to 13 millimeter. ये जो मेरी फिगर है ये शो कर रही है बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस हैज़ बीन मेड। तो यहाँ पे आप देखें एग्जिस्टिंग पार्ट है और ये उसका चेंज पार्ट है, और यहाँ पे उसको शो किया गया है रिवीजन सिंबल के साथ, और उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है। इन फिगर बी shows the drawing that has been changed twice, and the first changes was initiated by ECN on September 10, 14, and the second ECN was 2785 on November 18, 2014, and the number of times a drawing has been changed can also be identified by providing the letter
of the current change in the title block as shown here, and the drafter update this letter to reflect the E change. It means कि आपकी ड्राइंग के अंदर 3 times रिवीजन जो है वो परफॉर्म हो चुकी है, लाइक A, B and C. तो ये करंट रिवीजन नंबर है. Assembly drawing. Assembly drawing is a drawing of entire machine or system with all of its components located and identified. Or you can also describe the assembly drawing as all the machines and mechanisms are composed of numerous parts. A drawing that shows the product in its completed state is called an assembly drawing. इस फिगर के अंदर आपको एक असेंबली ड्राइंग शो की गई है और हर एक पार्ट को बलून्स के साथ आइडेंटिफाई किया गया है और इन पार्ट नंबर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल या पार्ट लिस्ट के अंदर शो किया गया है, जहाँ पे पार्ट नंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है और उनका मटेरियल जो है वो यहाँ पे शो किया गया. तो ये हमारे पास एक असेंबली ड्राइंग की एग्जांपल है. ये एक और असेंबली ड्राइंग की एग्जांपल है. डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पार्ट लिस्ट जो है वो टाइटल ब्लॉक के अबव प्लेस की गई है और प्रीवियस ड्राइंग के अंदर जो पार्ट्स लिस्ट है वो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर प्लेस की गई है. तो आप दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं अपनी असेंबली ड्राइंग के अंदर पार्ट लिस्ट को शो करने के लिए. एलिमेंट्स ऑफ एन असेंबली ड्राइंग. असेंबली ड्राइंग के अंदर आप 8 और 8 से ज़्यादा व्यूज़ को ड्रा कर सकते हैं. ऑक्सिलरी सेक्शन और एनलार्ज व्यूज़ अगर रिक्वायर्ड हो तो आप वो भी ड्रा कर सकते हैं. अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है असेंबली ड्राइंग के अंदर. प्रॉपरली अरेंज किया जाता है पार्ट्स को. ओवरऑल साइज एंड असेंबली की जो डिमेंशन है वो आप शो कर सकते हैं असेंबली ड्राइंग में. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो असेंबली के साथ एसोसिएटेड होता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन नंबर्स के बारे में आप बता सकते हैं. पार्ट लिस्ट के बारे में बता सकते हैं. तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं आप अपनी असेंबली ड्राइंग के अंदर शो कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपने लाजमी बताने होते हैं, जैसे पार्ट लिस्ट, आइडेंटिफिकेशन नंबर, overall size or the major dimension of the assembly or the manufacturing process and so on. हाँ, अगर सेक्शन व्यूज़ की या 8 से ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत है तो वो ड्रा किए जा सकते हैं. अगर 8 व्यू के साथ ही आपकी ड्राइंग कंप्लीट है तो फिर अदर व्यूज़ को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से अगर सेक्शन व्यूज़ को या लार्ज व्यूज़ को ड्रा करने की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द असेंबली ड्राइंग एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ओके जी, तो पहली जो असेंबली ड्राइंग है हमारे पास उसका नेम है लेआउट और डिज़ाइन असेंबली. बेसिकली इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर कैन प्रिपेयर अ डिज़ाइन लेआउट इन द फॉर्म ऑफ अ स्केच और एज एन इनफॉर्म ड्राइंग, एंड दीज इंजीनियरिंग design drawings are used to establish the relationship of the parts in a product assembly. So from the layout, the engineer actually prepares the sketches or the informal detailed drawings for prototype constructions. So this research and development is the first step in the process of taking a design from an idea to a manufactured product. So the figure shows the basic layout of assembly of a product in the development stages, and the limit of the operations are shown using the phantom lines. Okay, second type of assembly drawing is the journal assembly drawing. Journal assembly drawings are the most common type of the assemblies that are used in the complete set of working drawing. A set of working drawings that contains the 3 parts: detailed drawings, an assembly drawing and a part list. And the journal assembly drawing contain the feature that includes the multi-view, auxiliary views, detail views and the sectional views as needed for the specific product. Each part is identified
with a balloon get contained on a number of the part, and the balloon is a circle that is placed on the drawing with the part identification number inside the circle that is shown here. So each balloon is connected to its related part with a ladder line, and the identification number correlate to the same number identifying the part in the part list, and the part list identify every part in the assembly. So this figure shows the journal assembly drawing. Here is another example of journal assembly drawing. Working drawing or detailed drawing. A detailed drawing actually shows the detail of part combined on the same sheet with an assembly of the part. This practice is also referred to as the working assembly drawing. Although this application is not as common as a journal assembly, it is a practice used at some companies. So the detail assembly can be used when the end result requires the detail and assembly be combined on a few sheets as possible. जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है कि ये मेरे पास एक असेंबली की ड्राइंग है और जो इसके पार्ट्स हैं 1, 2 और 3 उसको भी इसी शीट के ऊपर शो किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देखें 2 डिटेल, मतलब ये जो पार्ट 2 है उसकी डिटेल ड्राइंग यहाँ पे शो की गई है, जो पार्ट नंबर 3 है उसकी डिटेल ड्राइंग यहाँ पे शो की गई है, और जो पार्ट 1 है इसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप जब डिटेल ड्राइंग को और असेंबली ड्राइंग को एक ही शीट के ऊपर शो करते हैं, इसको हम वर्किंग ड्राइंग और डिटेल्ड असेंबली ड्राइंग कहते हैं, और ये नॉर्मली आपके कैटलॉग्स और वेबसाइट के लिए मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है वर्किंग ड्राइंग और डिटेल असेंबली ड्राइंग की। इरेक्शन असेंबली ड्राइंग। बेसिकली इरेक्शन असेंबली ड्राइंग इज यूजली differ from the journal assembly drawing in that dimensions and fabrications specifications are commonly included. Erection assemblies are used for fabrication and assembly, and they are typically associated with products that are made of structural steel or with cabinetry. इस ड्राइंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है 3D के अंदर, और हर स्ट्रक्चर को नंबर असाइन किए गए हैं और उसकी डिटेल जो है यहाँ पे इस पार्ट लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, और इसकी डिमेंशन जो है यहाँ पे ये अप्लाई की गई है, और ये उसके डिफरेंट व्यूज जो है वो ड्रा किए गए हैं। सब असेंबली ड्राइंग। The complete assembly of a product can be made up of several separated component assemblies, and these individual unit assemblies are called the sub-assemblies. So a complete set of working drawing can have several sub-assemblies, each with its own detail drawing. The sub-assemblies are put together to form the journal assembly, and the journal assembly of an automobile, for example, include the sub-assemblies of the drive component like the engine component, the steering column, and so on. So as an assembly such as engine can have some other sub-assemblies or boilers such as carburetor and generator. तो असेंबली ड्राइंग के अंदर जब आपके पास मल्टीपल सब असेंबलीज भी शामिल हो जाए तो वो आपकी सब असेंबली ड्राइंग बनती है। मतलब कि आपकी एक असेंबली, लेट्स से कार की एक असेंबली है, उस असेंबली के अंदर एक सब असेंबली आपके स्टीयरिंग कॉलम की हो सकती है, उसी तरह से एक सब असेंबली आपके इंजन की होती है और बाकायदा होती भी है, और उसकी फिर ड्राइंग जो आप बनाते हैं उसको हम सब असेंबली ड्राइंग कहते हैं, और एट द एंड वो सब ड्राइंग जो है कंबाइन होकर आपकी एक फाइनल असेंबली ड्राइंग बनती है। पिक्टोरियल असेंबली ड्राइंग।
Pictorial assembly drawings are used to display a pictorial rather than the multi-views representation of the product, which can be used in other type of assembly drawings. Pictorial assemblies can be made from photograph, artistic rendering images, isometric drawings, or CAD models. The pictorial assembly drawing is used to assist the worker in the assembly of the product, and the pictorial assemblies are commonly used in product catalog or brochures, and these pictorial representations can be used for sales promotion, customer self-assembly, or maintenance procedures as shown in figure. So the pictorial assemblies can also be exploded technical illustrations and also commonly known as the illustrated parts breakdown, and these exploded technical illustrations are used in catalogs and instruction manuals and for maintenance or assembly instructions. So an exploded technical illustration displays the part of an assembly placed apart and shows how the part actually fits together. Each part in the exploded technical illustration is identified with a balloon correlated to a part list as shown here. तो पिक्टोरियल असेंबली ड्राइंग के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट्स की जब असेंबली के लिए जिस तरीके से प्रोडक्ट ने आपस में कंबाइन होना है, ज्वाइन होना है, आप उसका एक फ्लो जो है एक्सप्लोडेड व्यूज़ का ड्रा करते हैं और हर पार्ट्स को नंबर के साथ शो करते हैं और उसके लिए आप यहाँ पे टेबल जो है ड्रा करते हैं उन नंबर्स के अगेंस्ट उसकी फर्दर पार्ट्स की डिटेल लिखने के लिए। और मोर ओवर पिक्टोरियल असेंबली ड्राइंग्स को आप मेंटेनेंस या कस्टमर सेल सपोर्ट या सेल्स प्रमोशंस के लिए भी यूज करते हैं। व्यूज यूज इन असेंबली ड्राइंग, selecting views. So just to ask a question, does an assembly drawing need a front, top and right side view? And the answer is sometimes. So we need as many views as it takes to identify and locate the part, locate the each part, and it may only take one view. So here you see the three views are used to locate all of the parts. तो यहाँ पे एक पार्ट की असेंबली के लिए थ्री व्यूज जो हैं वो यूज हो रहे हैं उसको प्रॉपरली रोटेट करने के लिए। Here you see only one view is required to locate all of the part. So the decision of the views is purely depends upon the type of part that goes to the assembly. So जो पार्ट के व्यूज की सिलेक्शन है वो प्योरली डिपेंड करती है आपके पार्ट या प्रोडक्ट की असेंबलीज के ऊपर कि उसके लिए एक व्यू के साथ उसको लोकेट कर सकते हैं या नहीं। इस ड्राइंग के अंदर आप एक पार्ट के साथ इसको लोकेट कर सकते हैं, लेकिन इन दिस केस इट्स नॉट पॉसिबल टू लोकेट अ वन व्यू टू showing the all parts on the drawing. Sectional views. Sectional views are used quite often when drawing the assemblies. Why? Because assemblies often have parts fitted into or overlapping other parts and we need to look inside the assembly to see clearly. इस फिगर के अंदर आपको सेक्शनल व्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। यहाँ पे ये असेंबली ड्राइंग का फ्रंट व्यू है, ये असेंबली ड्राइंग का टॉप व्यू है, ये असेंबली ड्राइंग का साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो यहाँ पे जो अब एक स्क्रू है जिसने इसके अंदर फिट होना है उसको यहाँ पे जब शो किया है तो ये डॉटेड लाइन के अंदर आ रहा है। तो उसको प्रॉपरली ओरिएंट करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे एक सेक्शन व्यू के लिए सेक्शन लाइन कट की गई है और यहाँ पे उसका सेक्शन व्यू ड्रा किया गया है। यहाँ पे ये शो किया जा रहा है इस स्क्रू की
डेप्थ को और उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग को। और यही चीज़ आपको यहाँ पे इस फीचर के लिए भी शो की जा रही है। ओके, सेक्शन लाइंस इन assemblies. Section lines in adjacent parts are drawn in opposing direction. The largest area, the section lines are drawn at an 45-degree angle, and the next largest can be drawn at 135-degree or minus 45-degree. Some additional areas it can be drawn as 30-degree or 60-degree, and for smaller areas the distance between the section lines may also be varied to further distinguish between parts. Things to be include or not include. So when you decide what to include in an assembly drawing, remember that the purpose of assembly drawing is to show how the individual part actually fits together, rather than it is not used as the manufacturing print. Assembly drawing should not look overly cluttered. So some lines that are necessary in detail drawing may be left off the assembly drawing to enhance the clearance. Hidden lines. Do we include hidden lines actually? And the answer is usually, because they should be used where necessary for clearance. They should be left off when they impair clearance. And when a section view is used, hidden lines should not be used in that view. Dimensions. So do we include the dimensions too? And the answer is usually not. So as a rule, dimensions are not given on an assembly drawing, and if the dimensions are given, they are limited to some function of the object as a whole. Identification. ब्लूमिंग बेसिकली पार्ट को लोकेट और आइडेंटिफाई करने के लिए असेंबली ड्राइंग के अंदर हम सर्कल जो है उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो है नंबर को प्लेस करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जो बलून्स होते हैं वो ड्रा किए जाते हैं बिटवीन 10 to 25 मिलीमीटर के डायमीटर के। और ये मेरे पास डिफरेंट बलून्स की ऑप्शंस हैं जिनको हम असेंबली ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। Like here you see the balloon contains the part number. The balloons are placed in order horizontally or vertical rows. Ladder line should not cross and be as parallel as possible. And here is another example related to the identification drawing. और यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक पार्ट की एक प्रोडक्ट की असेंबली ड्राइंग है और उसको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ शो किया गया है। जो अबव नंबर है वो पार्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जो बॉटम में नंबर है वो डिटेल पार्ट जो आपका जिस पेज के ऊपर ड्रा किया हुआ है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो पेज है जो शीट का वो 1 है और यहाँ पे असेंबली ड्राइंग शो की हुई है और इन सब पार्ट्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे शो की गई है शीट 2 of 2 के अंदर। तो ये आपको पार्ट नंबर जो है 1 2 3 4 उसको इंडिकेट कर रहे हैं और जो बॉटम में 2 लिखा हुआ है वो शीट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट्स लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल। द पार्ट लिस्ट is also known as the bill of material or the list of material, and it is usually combined with the assembly drawing, but it remains one of the individual components of a complete set of working drawing. And the part list can contain the part number, part name, the required number, the material identifications, descriptions, sheet number, some purchase past information, and so on. Some other information like stored material weights can also be included. Parts are listed in the order of their part number, and the part numbers are usually assigned based on the size और importance of the part. So यहाँ पे again हमारे पास पास लिस्ट जो है वो प्लेस की गई है इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग और ये सब हमारे पास पार्ट नंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं, उनकी
रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ हैं और मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इस असेंबली ड्राइंग के अंदर। Here you see another example, पार्ट लिस्ट को आप अबव राइट कॉर्नर पे भी प्लेस कर सकते हैं और टाइटल ब्लॉक के अबव भी राइट साइड पे प्लेस कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड मेथड्स हैं। पार्ट्स लिस्ट और द स्टैंडर्ड पार्ट्स। Standard parts include any part that can be bought off the shelf. They do not need to be drawn, and the purchasing information is given on the standard part sheet attached to the back of the drawing, or you can say working drawing package. तो ये मेरे पास एक पार्ट लिस्ट की ड्राइंग की शीट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी गई है कि ये हमें पार्ट चाहिए या हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी क्वांटिटीज चाहिए, पार्ट नंबर क्या है, और उसकी सम अदर स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे शो की गई हैं। और यू कैन सेपरेट द पार्ट लिस्ट फ्रॉम द असेंबली ड्राइंग, और उसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर आप पार्ट नंबर्स लिखते हैं और देन आप पार्ट नेम और उसकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं और फिर आप उन पार्ट्स को परचेज करते हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं तो इनकी फिर आप ड्राइंग जो है वो ड्रा नहीं करते हैं, उनकी सिर्फ आप पार्ट्स शीट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जर्नल फास्टनर स्पेसिफिकेशंस। So what type of information should be included? Thread specification for the thread fasteners, head point style or shape and the name of the fasteners, fastener length or size, fastener series, material, special requirement, coating finish, स्पेसिफिकेशंस टू मीट। तो जब आप पार्ट्स की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें जो आपकी डिफरेंट फास्टनर्स की लिस्ट बनती है तो उसके अंदर आपने मेनली इन इंफॉर्मेशंस को लाजमी मेंशन करना होता है किसी भी फास्टनर्स को परचेज करने के लिए, ये इंफॉर्मेशंस के बारे में बताना ज़रूरी है। और आल्सो द क्वांटिटी दैट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स आपको किसी स्पेसिफिक फास्टनर्स के चाहिए। ओके, वर्किंग ड्राइंग पैकेज। तो अब हम यहाँ पे एक असेंबली ड्राइंग ड्रा करेंगे हमारे क्लैम्प की जो कि राइट साइड पे शो किया हुआ है, और देन हम डिटेल ड्राइंग ड्रा करेंगे ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्लैम्प एंड देन वी क्रिएट द स्टैंडर्ड पार्ट शीट्स। तो ये मेथड या ये स्टेप्स जो हैं आपने बेसिकली फॉलो करने होंगे जब भी आप किसी भी पार्ट के लिए असेंबली ड्राइंग को ड्रा करेंगे। पहले आप असेंबली ड्राइंग, फिर इंडिविजुअल पार्ट्स की ड्राइंग और फिर आप स्टैंडर्ड पार्ट शीट, इस तरीके से आप इसको ड्रा करते हैं। ओके जी, तो ये आ गया जी मेरे पास सबसे पहले असेंबली ड्राइंग। हम सबसे पहले इनको बलून्स असाइन करेंगे पार्ट नंबर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और अब हम इन पार्ट नंबर्स को फिल करेंगे अपने बिल ऑफ मटेरियल के टेबल के अंदर लाइक दिस। तो ये हमारी कंप्लीट असेंबली ड्राइंग जो है वो बन चुकी है हमारे क्लैम्प की। देन हम टाइटल ब्लॉक्स को फिल करेंगे और जो हमारी मल्टी व्यू ड्राइंग है उसको हम ड्रा करेंगे अपने पार्ट्स के लिए, और ये हमारी कंप्लीट 8 पार्ट के लिए मल्टी व्यू ड्राइंग जो है वो बन चुकी है जिसमें फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू को शो किया गया। डिपेंड करता है कि पार्ट्स के अंदर अगर 2 व्यूज की जरूरत है तो फिर आप 2 ही व्यू ड्रा करेंगे एंड सो ऑन। देन आप पार्ट्स की डायमेंशंस को ऐड करेंगे और अपने टाइटल ब्लॉक्स को फिल करेंगे और ये आपकी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो अब हम अपने जो पार्ट्स हैं उसकी ड्राइंग बनाएंगे, मल्टी व्यू ड्राइंग बनाएंगे। तो ये पार्ट्स की मल्टी व्यू ड्राइंग बन गई और उसके अंदर आपने टाइटल ब्लॉक्स को फिल किया और ये कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप अब अदर पार्ट की मल्टी व्यू ड्राइंग ड्रा करेंगे, इसमें हमें सिर्फ 2 व्यूज़ चाहिए, उसको ड्रा किया, हम इसकी डायमेंशंस ऐड करेंगे, टाइटल ब्लॉक्स को फिल करेंगे और ये हमारे सेकंड पार्ट की मल्टी व्यू ड्राइंग जो है वो रेडी हो गई है। नेक्स्ट हम जो पार्ट नंबर 3 है उसकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लास्ट पे स्टैंडर्ड पार्ट शीट जो है वो प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी असेंबली ड्राइंग। तो मेक श्योर कि आप असेंबली ड्राइंग पहले बनाएं, फिर उसके बाद उसके हर पार्ट के लिए ड्राइंग ड्रा करें, और अगर सब असेंबलीज हैं तो फिर आप डेफिनेटली सब असेंबलीज की भी ड्राइंग बनाएंगे और सब असेंबलीज के पार्ट्स की भी ड्राइंग बनाएंगे, और एट लास्ट आप अपने पार्ट्स की जो परचेज लिस्ट है जो आपने परचेज करने हैं उसकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे एंड दैट्स ऑल। आपकी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी असेंबली ड्राइंग। एनालिसिस ऑफ अ सेट ऑफ वर्किंग ड्राइंग। So
First, you have to create a product idea using the research or the rough sketches. Then you prepared a complete set of working drawing that includes the detailed drawing, assembly drawing, and the part list. Then you develop the content for the product catalog. Then you made and document the engineering changes as needed. So in this figure you see a rough engineer sketch that contains the unintentional errors, and the typical engineering sketch may not be as good as the one in this example, and the engineering drafter convert the sketch to proper ASME or some other standards as appropriate, and the dimension values shown here are in inches. In this figure you see the original handle detailed drawing that is based on the engineer sketch before the ECR is issued. So you can notice the 0 in the lower right corner, or this indicates an original unchanged drawing, and the dimension values are also shown here are in inches. In this figure you see the original driver detail drawing that is again based on the engineer sketch before the ECR is initiated, and you can also notice the number 0 shown here, and the again dimension values are in inches. And here you see the assembly drawing for the screwdriver, and here you see the pictorial assembly drawing of the screwdriver for the company catalog, and here you see the exploded pictorial assembly drawing. This is the sample for ECR that is used for applying the engineering change request. Okay, so when the product is in production, a change can be requested from any department within the company that include the manufacturing, engineering, and sales. And changes can be based on the new way to manufacture, redesign, customer feedback, or any variety of other issues. Before a drawing can be changed by the drafting department, it is usually required an ECR, and which is the document that is used to initiate a change in part or assembly. Every company has an ECR form, and most of them are similar in appearance. And here ECR form is shown that display the engineering change request for the driver from previous drawing. Okay, so in this figure you see the changes to the driver are based on the ECR is shown here, and notice that the revision symbol is placed next to the each change that is shown here A, and the identification of the change is found in the upper right corner in the revision history plot that is shown here, and the current change A is identified in the lower right corner of the title plot that is shown here, and the dimension values are again in inches. So in this table the complete engineering change notice form is shown. So let's discuss each of the steps one by one. In step 1 you put the ECN number at the top right corner of the sheet, and in step 2 you list the quantity of the part affected, and in step 3 you list the drawing sheet size, and in this case the drawing sheet size is B, SR-31 is the part number, and B is represented the sheet size. In step 4 you list the revision related to these changes. In step 5 you place the title for the drawing or part. In step 6 you identify the changes you made. In step 7 you list what is to be done with parts
already made under the old design. So use a symbol such as A, U, T or S, and the description is shown to the right of each symbol. Like A is represent the alter or revert, U is used to represent the use in production, T is used to transfer to service store, and S is used to scrap. So here we write a U, mean the use in production. This means that all parts already made to the current specifications are used in production until the supply runs out, and then the newly revised parts are used. Okay, in step 8, you identify the reason for the change in brief but complete statement so someone can later on find the way the changes were made. And in step 9, this is actually the step number 9, that check the yes or no to help the manufacturing department determines if casting or forging are affected. If yes is checked in this case because the forging die for the driver needs to be modified. In step 10, initials of your name or the initial of the project engineer. So if the question arises about the changes, those asking questions know who to query. In step 11, your supervisor approves the changes you made. In step 12, parts are listed as 1/1 for one page change document, as in this example, or an example of 3 pages document has the page number 1/3 or 2-2/3, 3/3, or you can say 1 of 3, 2 of 3 and 3 of 3. So these are the samples that can be used here for writing the page numbers. And at last, step number 13, the date you make the change is recorded. Thank you for your attention.